Hello, welcome and Giayanu to Health Update on Akala channel. It gives me great pleasure to welcome you to this second part of the show, which is brought to you with the kind sponsorship, I should say, of Warsaw Clinical Commissioning Group. We're going to be talking to you about a very important condition today, which is costing the NHS 10% of its national budget. That's huge amounts. We're spending up to £27 million a day in trying to manage this condition. And helping me in sort of telling you about this condition in terms of monitoring it and treatment and complications is Joe Myatt, who's a nurse specialist in diabetes. Hi. Welcome to the show, Joe. Hi. I also have Zara, who is an educator for patients who suffer from diabetes. Welcome to the show. Thank you. And we have Tan, who is a NHS qualified nurse and works with diabetic patients. Hello. Welcome to the show. So, Joe, just tell us a little bit about your work with patients sort of who are diagnosed with diabetes and what you do for them. Well, I'm a clinical nurse specialist in diabetes, so my main role is to run clinics where I see patients who are referred to me for management of their diabetes, who may be struggling with their diabetes, so that I can give them options regarding medication, hopefully give them advice and education on how they can better self-manage their condition. Great, you must be a very busy person. Absolutely. And Zara, how about yourself? I work alongside Joe Myatt doing the clinics as well in Walsall area. And I also do diabetes education for the Asian community, so advising them on their diet, lifestyle changes, complications of diabetes, how to manage the diabetes. अच्छा, तो आपका रोल जो है वो काफ़ी एजुकेशन वाला होता है। एजुकेशन के लिए होता है ज़्यादा। हमारी अपनी ज़बान में मैं बात करती हूँ अपने एशियन पेशेंट्स के लिए, साउथ एशियन पेशेंट्स के लिए। Fantastic. और टैन, आपका क्या रोल है? मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा रोल डायबिटीज़ नर्स है और जो पेशेंट्स एक्यूटली अनवेल होते हैं, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल वार्ड्स में, हम उनकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट का हेल्प करते हैं और हम आउट पेशेंट क्लिनिक्स भी करते हैं हॉस्पिटल में। Brilliant. Well, once again, thanks for coming on the show. We'll start with yourselves, Joe. I mean, we're going to talk about essentially a patient who's a diabetic. And I get a lot of patients who come to me bringing their special kit that that they check their blood sugar with. Could you tell us about what role this has in terms of managing diabetes? It's a common myth really that people think if they have diabetes they need to use one of these machines for monitoring the blood glucose levels. What this machine simply does is it will give you a result of or tell you what your blood glucose level is at this specific moment in time. It can be very useful to know what your blood glucose levels are when monitoring diabetes. However, it's important to understand that not everybody with diabetes needs to routinely monitor blood glucose levels. Most people who start off with diabetes are managed with diet, maybe managed with some early medication. And for these groups, you probably don't really need to monitor blood glucose levels. It involves pricking your fingers, which can be quite painful and make your fingers sore. So it's not something you need to do routinely. Once you progress down the medication options, particularly on medications that can make blood glucose levels fall and occasionally fall to more dangerously low levels, then we would tend to recommend that these groups of people monitor their blood glucose levels. So I think the important thing with monitoring is if you have diabetes and you feel it may be appropriate for you to monitor, speak to your healthcare professional to get advice on whether it is appropriate to monitor so that you're not spending money and maybe pricking your fingers unnecessarily to test your blood glucose levels. That's right. And there's a different blood test out there, isn't it? We use a HbA1c to monitor blood. There is a blood test that is done at the surgery, at your GP surgery, which is called HbA1c. The other name for it is called glycated hemoglobin. And what we do here is we measure the amount of blood glucose or sugar contained in red blood cells in the body. These red blood cells have a life of around 3 months. So it's very useful because it gives us an indication, an idea of what your blood sugar levels have been for the previous 3 months. So it's more of a long-term estimation of your blood sugar control. Very useful test. And that can be carried out probably twice, maybe 3 times a year. So that will give you a very good idea of how you're managing your diabetes, how your levels of control are, and avoids this need for daily blood testing for a lot of people. Fair enough. So ज़रा बताएंगे कि ये दो तरह के ब्लड टेस्ट जो हैं, जो कि ब्लड ग्लूकोज सब हम प्रिक कर ब्लड टेस्ट लेते हैं, और दूसरा जो लैब वाला है HbA1c, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, जैसे आप जो ने बताया पहले कि ये जो मीटर जो टेस्टिंग करते हैं, ये आपको उस मिनट उस वक्त बताएगा कि आपकी शुगर लेवल्स क्या होना चाहिए,
और इसकी जो रेंज होती है वो 4 और 8 के दरमियान में होना चाहिए। जो HbA1c जो टेस्टिंग होती है, जो यहाँ से खून आम से खून लेते हैं, वो 3 मंथ का एवरेज हमें बताता है, और वो इस टेस्टिंग से थोड़ा सा अलग होता है। वो हम टेस्ट करते हैं, वो आपका जो ब्लड टेस्ट होना चाहिए वो 50 और 60 के दरमियान में होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं, 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको डायबिटीज़ आपके मतलब में बढ़ रही है, तो अलग अलग टेस्टिंग करने का होता है। ब्रिलियंट। और टैन जैसे ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से सो ब्लड टेस्ट आपके लिए एज समवन हु इज़ डायबिटिकनेस ज़्यादा कौन सा टेस्ट मायने रखता है? जो अर्ली डायग्नोसिस में जो डाइट और लाइफस्टाइल में डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, या जो सिर्फ मेटफॉर्मिन की टैबलेट ले रहे होते हैं, फिर गाइडलाइंस, हाँ आप गाइडलाइंस है कि आपको ब्लड ग्लूकोज मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपका जो GP है वो आपका हर साल HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं साल के बाद हो, मिनिमम 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं। उस HbA1c रिजल्ट से वो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल का पे नज़र रखते हैं। तो जैसे ज़रा बता रहे, टारगेट्स आइडियली हम चाहते हैं कि आप 48 और 53 के दरमियान रहें। ये HbA1c के टारगेट हैं, और इस टारगेट में अगर आप जितना इस टारगेट में रहेंगे ना, उतना आपको जो लॉन्ग टर्म की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम होगा। जैसे हमने पहले भी कहा है, डायबिटीज़ बीमारी ही ऐसी है जो बढ़ती जाती है, टाइम से आगे बढ़ती जाती है। अगर आपकी बीमारी अर्ली स्टेजेस में है और आप डाइट चेंजेस कर रहे हैं और लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन गोली अगर खानी भी पड़े तो भी आपकी मशीन की ज़रूरत नहीं है। Fair enough. So, Tan's just telling us there in terms of sort of the role of diet and exercise that we've discussed in the previous show. But in terms of the medication, Joe, I mean, generally, what is the role of medication in diabetes? Well, as we've said, the first line, of course, is lifestyle, but not everybody will manage purely with lifestyle. We do often need to go down the medication route. And the first drug that we tend to use is a drug called metformin. This is a very well-established medication now that we use in diabetes, and it helps to regulate blood glucose levels in most people. It's a very useful drug because it doesn't cause blood glucose levels generally to fall too low, so we're not concerned about low sugar levels, and it doesn't cause any weight gain, so it's a very useful medication for us to use. Following from there, there are a number of other medications that we can then start to use. Some medications increase insulin output in the body, some medications can make you a little bit more sensitive to insulin. So there is a number of these medications that we can look at and hopefully tailor to the patient's best needs, depending on levels of control, levels of weight management, this type of thing that it's taken into account before medication is decided upon. Yeah. And in ये जो दवाई जब हम शुरू करते हैं, क्या ये हम सब में शुरू करते हैं ज़रा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए दवाई शायद ना ठीक हो? जैसे तो पहले आपने डायग्नोसिस किया कि आपको डायबिटीज़ है, तो पहले हम कंट्रोल करते हैं कि डाइट से कंट्रोल कर ले तो ठीक होता है पेशेंट के लिए। अगर डाइट से कंट्रोल ना हो, एक्सरसाइज वगैरह से डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो हम उसके ब्लड रिजल्ट्स देखते हैं। जब ब्लड रिजल्ट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर हम गोली शुरू करते हैं। फिर वो गोली, जैसे जो ने बोला, मेटफॉर्मिन गोली पहले इनिशियली हम देते हैं उनको। अगर मेटफॉर्मिन से भी कंट्रोल ना हो, डाइट एक्सरसाइज वगैरह के साथ भी कंट्रोल ना हो, वापस उनके ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट वापस चेक करते हैं, फिर वो ब्लड टेस्ट अगर बढ़ रहा है तो फिर हम और गोली देते हैं, ग्लिसराइड गोली। That's right. Certainly, when I've seen patients, sometimes metformin has caused sort of ill effects like, diarrhea, that makes them feel like they want to vomit. Or in that instance, भी हम जो दूसरे medicines वगैरह हैं जो use कर सकते हैं, we can, use alternative medication in terms of that. But I mean, it's shocking figures, Joe. I mean, 10% of the NHS budget is going on sort of managing diabetes in this country. Enormous amount, yeah. And even more shocking, in the next 5 years, this is expected to, double. And it's quite sad sort of to think that actually we're not going to be able to sort of keep up with that. But what are we now sort of doing in terms of specific patients where medication is not enough to manage this condition? Well, as you said, diabetes is an enormous problem, and there are new medications and new drugs coming through all the time. But of course, the problem with diabetes is a problem with insulin, as insulin production, and generally, as time goes on, as the disease progresses,
your insulin levels become less and less and more depleted. So eventually people will require insulin as part of their therapy, and a lot of people will progress onto insulin therapy. Very interestingly, insulin therapy, because it has to be given as an injection, we can't give insulin as an oral medication. If you swallow it, you drink it, it doesn't work. So it has to be given as an injection. Unfortunately, that makes it into this idea that it's a much more serious problem if you have to take insulin, that the condition is more serious because you're having to inject therapy. Insulin is a very, very effective drug. It's very, very good at bringing down blood glucose levels and regulating blood glucose levels. The injection itself is a very simple, generally painless injection. So although there is a big fear around insulin, particularly in the Asian population, it isn't something that people should be particularly fearful of. If it's the right choice of medication for them at that time, then it's something that they should embrace and they should use, because ultimately it's about controlling the diabetes and trying to prevent the complications of diabetes, which is important. Brilliant. So, I mean, ज़रा जैसे ये बता रहे हैं कि जो इंसुलिन है, there's going to be a point at some, है ना, जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़े. Although जो types of diabetes भी हैं, जो type 1 में इंसुलिन की एकदम ज़रूरत पड़ती है, but हम जो बात कर रहे हैं वो type 2 की है, जो कि 90% of the population को ये type of बीमारी है. शो के पहले हम बात कर रहे थे कि एक और भी तरह की डायबिटीज़ है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अफेक्ट करती हैं, जिनमें जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, क्या होती है ये? Sorry, can I stop you there? Can you ask her, because she's mainly... Of course, sorry. Yes, Tan आप बताएं प्लीज़ कि जी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ उस किस्म की बीमारी है कि जितनी देर की लेडी प्रेग्नेंट रहती है उतनी देर के लिए वो डायबिटीज़ रहती है. जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ये डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी, उनको स्टिल हाई रिस्क फिर टाइप 2 डायबिटीज़ का होता है लेटर ऑन इन लाइफ, लेकिन ये स्टिल एसोसिएटेड विद लाइफस्टाइल. सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में फिर भी पहले हम डाइट और लाइफस्टाइल का एडवाइस देते हैं. सो ट्रीटमेंट सिमिलर होती है. लार्ज परसेंटेज ये औरतें जब इनका बेबी डिलीवर हो जाता है फिर इनकी डायबिटीज़ चली जाती है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर रहता है. सो जब हम डिस्चार्ज करते हैं उनको, हम फिर भी उनको डाइट और लाइफस्टाइल का एडवाइस देते हैं. Yes. और इनमें भी आप पहले दवाई शुरू करेंगे और उसके बाद में इंसुलिन वगैरह जो है शुरू करेंगे या नहीं? पहले हम डाइट का बोलते हैं. पोर्शन साइज कंट्रोल करना, जी, डाइट कंट्रोल करना. बेशक वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो फिर भी हल्का हल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस डाइट कंट्रोल है. अगर वो ना वर्क हुआ तो मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, तो हम मेटफॉर्मिन की टैबलेट भी शुरू करते हैं. अगर डाइट और मेटफॉर्मिन से ना काम बना तो फिर हम इंसुलिन शुरू करते हैं, बिकॉज हम प्रेगनेंसी में टारगेट्स देते हैं और उन टारगेट्स में फिर बेबी को ख़तरा नहीं है. अगर उन टारगेट से ब्लड शुगर्स हाई रहे ना तो वो बेबी को फिर खतरा है, इसलिए हम वो स्ट्रिक्ट टारगेट्स देते हैं लेडीज़ को. Brilliant. So thank you very much for that. Like you've heard, there's a lot to in terms of managing diabetes. There's a lot that patients can do in terms of their lifestyle and diet, but there's a lot that us clinicians do in terms of managing this condition, and it's very much a teamwork. Let's now take a break, and we'll be back to discuss the complications of this condition and how they are managed in the current NHS environment. See you shortly.